12 from the book Flamingo. The name of the poem is Keeping Quiet. Keeping Quiet is composed by a Spanish poet, Pablo Naruda, which was later translated into English. So it's better to understand what the poem is about. In fact, before I start the poem, I would like to convey to all of you that we are living in a very different entity these days. The world has become chaotic. World has become very busy. Everybody is centered upon some special target to achieve in life. And sometimes it appears that this is a mad race and this becomes like a mirage. We are just becoming ambitious and ambitious and ambitious. We are just willing to get those things which perhaps in our lifetime we fail to achieve. And this way we're frustrated. We won't have any time to think over something. We don't have to, we don't have any time to go spiritual. So, what's the theme of this poem is peace and silence. Role of peace, role of calming ourselves. Then what to do? Before understanding this, I would like to go through the beautiful lines of the poem. This is the Flamingo book of class 12. You can see, and these are the lines which I am going to explain to you. The poem starts with the line, now we will count to 12 and we will all keep still. We stands for all the humanity. The poet, it addresses the people on this planet and requests, or we can say makes an appeal that we must all be silent for some time, and he appeals us by asking us to count up to 12. Very good question to ask as to why especially 12 to count. Why does poet ask us to count 12? Why not 7? Why not 9 or 10? Why especially 12 has been chosen by the poet to be counted? Of course, let's see. There are 12 hours in a clock. There are 12 months in a particular year. There are 12 zodiac signs. So 12 is quite special, which is directly or indirectly related to our activities, to our stars, to our well-being. So the poet has specially taken the number in order to include everything. So the poet's request, poet's appeal, now we will count to 12 and we will all keep still. Poet appeals us to count to 12 and for some time keep still and calm, to maintain peace. And then what happens? When you count it up to 12, what will happen? For once on the face of the earth, let's not speak in any language. On this planet, all the people are appealed not to use any language, not to express themselves in any language. Because language creates a barrier between people. Language is something that creates barriers between people. I speak Hindi, you speak English, you speak any other language. And then what happens? This is creating a barrier. I can't understand any other human being who is trying to express himself in Spanish because I don't know Spanish. I don't know French. So if someone is trying to explain to me anything in French, I can't understand. So it's creating a barrier. We have to destroy these barriers by keeping quiet. When there is no language, there will be no barrier. There will be the feeling of oneness. That is, we all are human beings. We all are brothers. Come on now. Let's stop for a second. Even he has told us a time limit. That is, even for a second, you can go in for a pause and not move our arm so much. Move our arm so much means we should not engage ourselves in any activities. We should stop all of our activities. You have to positively consider this statement of the poet about stopping all the activities. And if you say,
The activities cannot be stopped, because stopping activities means stopping the way of life. No, that is wrong. It will further explain by the poet what in fact he means by stopping the activities. It would be an exotic moment, without rush, without engines, and all be together in a sudden stillness. Then how will you feel after keeping our activities suspended for a while? He says that's a very strange moment, and only those who are engaged in this activity will realize how pleased they are, how happy they are, how delighted they feel. With rush, without it, there will be no rush, because the people are sitting silent. There will be no sound of engines, because nobody is driving, nobody using any machine. We would all be together in a certain, and in this way, we, the people on earth, will be together in a very strange and sudden, exotic movement. So, unity has been emphasized by the poet. Peace and unity, brotherhood, sense of brotherhood, that is essential to live life on this planet. Then he says, what will happen if we keep quiet for some time? He says, fishermen won't halt their creatures. The fishermen in the cold sea won't harm theirs. In this way, the life of the whales in the sea will be extended, because the fishermen are at rest. So it's a very good idea. When you don't harm any animal, that is environment-friendly activities, eco-friendly activities. And the man gathering salt would look at his hurt hand. In this way, what will happen? The man who is engaged in the work of gathering salt would have time to nurse his wounds, because that is the nature of this activity, that we happen to get our hands hard if you're working with the sword. So if we suspend our activity for some time, what will happen? We'll have time to see our wounds and get recovered. That's right. Now those who prepare green wars, who are green wars preparer? We people. In this way, green war means we are taking up the activities which are leading to deforestation, mining, and this way we are going to destroy nature. Those activities which are destroying nature would for some time be stopped. Wars with gas, wars with fire. Wars with fire means we are manufacturing missiles. That activity will be stopped for some time. Wars with gas, we are just making bombs, hydrogen bombs, neutron bombs. And this activity will be suspended for some time. That is just a step towards promoting peace and harmony in the world order. Victory with no survivors. Actually, all these persons who are engaged in weapons, who are engaged in useless killing of human beings, would have victory, but that victory is of no use. In fact, that's not called a victory if we get it after killing all the people. What kind of victory this is? The poet explains, no victory at all. When there is no survivor, there will be no victory. Charles Darwin once told, if there is Fourth World War, there will be no survivor, and that will be fought with stones and sticks. This implies that if Third World War takes place, all the human race will be perished, will be destroyed. Naturally, Fourth World War won't take place, because there will be only stones and sticks left on this planet. So, what happens thereafter? Victory, no survivors. Actually, what these soldiers are doing? They also don't want any fellow soldiers to be killed, but they are killing it because they are following the order of their superiors. Just by following the instructions and orders of their superiors, you are killing your own brethren. This is a mad sense. In fact, there is no insanity in this activity. And so the poet appeals us to put on clean clothes. Put on clean clothes means we have to change the world order. We have to put on new thoughts and ideas
of peace and unity and walk about with their brothers. And when we are all living, we are approaching the new world order. We are again moving with our hands, with our brothers, hand in hand. How beautiful is this moment? In the shade, doing nothing, and we will be very happy. We are doing nothing because we are all living in peace. What I want should not be confused with total act. In fact, here the poet has advocated the inactivity. We have not to take the meaning of inactivity negatively. In fact, this is in the positive sense. We sleep in the night and we say that we have wasted our 6 and 7 hours. During this time, we must have prepared the law for examination. Is it a positive idea? No, this is negative, because by taking a sleep for 8-9 hours, we have recovered our fatigue and we are again refreshed, and we can put in all the more efforts in our activities and get better results. What I should not be confused. In fact, the poet wants to make it clear he has nothing to do with the inactivity. In fact, he doesn't say this is inactivity, because he is quite against the idea of inactivity. Inactivity means death, and he does not have any relation, any truck with death. If we were not so single-minded about keeping, of course, the poet emphasizes that we have become selfish these days. We are ambitious but selfish. We just want to make our own life moving, and at the cost of others, we are doing everything. We don't care for others. In fact, this type of ideology, this type of thought process should be changed, and for once could do nothing, perhaps a useless. So, in order to bring a peace and unity and harmony in the world, you have to keep silent for a moment. This is poet's emphatic appeal to we people, and this will certainly come in the way of sadness. You will again start feeling quite happy. Just keeping silent, you are coming in the way of sadness, of never understanding why we are sad, because we are not understanding ourselves, because we are not understanding anybody else, and of threatening ourselves with death. And our own activities, which we don't understand what we are doing, are leading us to our own death. We are destroying ourselves. And this way, if we inactivate ourselves for some time and introspect, just think over the process, we keep peace, we are saving ourselves from jumping into sadness. In this way, perhaps the earth can teach us, and earth is the best example to learn. At a time when there is autumn or the earth goes dry, it seems that everything is going away. This will never revive, but after some time, in a particular season, you will find the earth comes up with new branches of trees, new flowers, and new birds. How beautiful it is to see. So this is the life, and now I will count up to 12 and you keep quiet. And so ultimately the poet again appeals us to count up to 12. Just keep quiet for some time and be happy. This is the poem. I think you have understood the poem in English. I would like to again emphasize that this is quite in touch with our Indian aspect of spiritualism, where we lay emphasis on thinking process, understanding ourselves, and especially introspection, and that will lead to our happiness. The poet has also caught up that idea and has laid emphasis on introspection. We can understand ourselves. Once we start understanding ourselves, we can understand the whole world order, and that is the best way to keep ourselves happy. This is how the poem goes. Now, in Hindi as well, I would like to explain for those who have some problem in understanding the poem thoroughly in English. देखिए बच्चों, मैं इंग्लिश के बजाय हिंदी में भी आपको बता देता हूँ. ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नरूदा ने लिखी है, स्पेनिश पोएट है. उसने बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था.
उसने अपील की है पूरी दुनिया के लोगों से कि 12 मिनट 12 तक गिनिए और फिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाइए। याद कीजिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि मेडिटेशन हम भी सुनते हैं, हम भी करते हैं, देखते हैं। मेडिटेशन से सचमुच में ही शांति मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है। तो थोड़ा सा कभी नहीं और ढंग से कहा है, लेकिन अगर हम बात को पकड़ेंगे तो वही हमारा इंडियन मेडिटेशन वाला ही है, फॉर्मूला है। उसने कहा 12 तक की गिनती कीजिए और थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। थोड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है, 12 तक की गिनती क्यों? 12 तक की गिनती के पीछे कवि का कहने का मतलब ये है कि सारी दुनिया के लोगों, देखो घड़ी पे 12 नंबर ही होते हैं, 12 बजे तक, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 12 बजे, फिर 12 सीजन होती है और ज्योतिष में भी जो राशियां होती हैं 12 होती है। तो इसका कहीं ना कहीं से हमारी लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन है। कभी ऑल इंक्लूसिव होना चाहता है, इसमें सबको कहना चाहता है, सारे ह्यूमन बीइंग को कहना चाहता है आप सब 12 तक की गिनती कीजिए और थोड़ी देर शांत हो जाइए। एक बार अगर आप शांत बैठ गए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। कोई भी भाषा का इस्तेमाल मत करो, कोई भी भाषा, क्योंकि भाषाएं हमेशा बैरियर्स क्रिएट करती हैं, भाषाएं दुश्मनी क्रिएट कर देती हैं, भाषाएं इंसानियत में फर्क पैदा कर देती हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए कोई भाषा का इस्तेमाल मत करिए और ना अपने कोई हाथ पैर हिलाइए, मतलब कोई एक्टिविटी मत करिए, चुप बैठिए, मेडिटेशन कर लीजिए। आत्मदर्शन करने से इसका क्लियर मतलब है कवि का। हम बोलते हैं अपने आप को समझो, आत्म मंथन करो, आत्मचिंतन करो, वही चीज है ये, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए आप। इट वुड बी, और अगर आप इस मोमेंट में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, आराम से बैठ के मंथन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो इतना बढ़िया विचित्र क्षण होगा कि उस आनंद को आप शब्दों में नहीं कह पाएंगे। न कोई भीड़ होगी, न कोई आवाज होगी, न कोई साउंड होगी, और एक प्रकार से देखा जाए सारी दुनिया हमारी एक होगी, इन द सेंस ऑफ कीपिंग साइलेंट, वी ऑल आर वन एट दिस मोमेंट। और एक अजीब सा माहौल बनेगा, उस माहौल में एक अजीब सी शांति होगी, अजीब सा आनंद होगा। अब इसके फायदे क्या होंगे? शॉर्ट में कभी ने 2-3 एग्जाम्पल नहीं, फिशरमैन का एग्जाम्पल दिया। जो मछुआरे हैं, जो मछली मारते हैं, तो अगर आप शांति से बैठ जाएंगे तो किसी मछली का जीवन बच जाएगा, उसके जीवन एक्सटेंड हो जाएगा। जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, थोड़ा आराम करवा, थोड़ा जीवन एक्सटेंड हो जाता है, और क्या, मरना तो एक दिन है ही, लेकिन जीवन एक्सटेंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये भी एक गुड पॉइंट है, मछलियों का जीवन एक्सटेंड हो जाएगा अगर फिशरमैन थोड़ा सा आराम से बैठे। फिर जो नमक इकट्ठा करते हैं लोग, नमक बनाने वाले लोग, वो अपने घावों को देख पाएंगे। घाव क्यों? क्योंकि नमक बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ऐसा होता है कि इसमें घाव पड़ जाते हैं हाथों पे, नेचर ही ऐसा है काम का, और बेचारे लगे रहते हैं, कभी घाव सही नहीं हो पाते। इसलिए क्या है कि अगर चुप बैठ जाएंगे तो अपने घावों की नर्सिंग कर पाएंगे, उनको सही कर पाएंगे। Those who prepare for green wars का मतलब है जो लोग एनवायरमेंट के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, जंगल काट रहे हैं, कंक्रीट के मकान खड़े कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, सारे नेचर को हम अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो विक्ट्री, तो ऐसे लोग क्या है, एक दिन जीत तो जाएंगे, मैंने मकान बना लिया, मेरी विजय हो गई, लेकिन इनफैक्ट मैं विक्ट्री नहीं, मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ। फिर विक्ट्री तो होंगी दुनिया में वॉर करके। वॉर विद फायर का मतलब क्या है? जो हम मिसाइल्स बनाते हैं, गैस, ये जो बम बनाते हैं, ठीक है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम जीत तो जाएंगे। अरे एटम बम चला देंगे, जीत जाएंगे, न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, जीत जाएंगे, लेकिन क्या है, कोई इंसान ही नहीं बचेगा, तो हमारी विक्ट्री किस काम? राइट? विक्ट्री तभी होगी जब कोई इंसान बचेगा। किसी फिलोसफर ने एक बार कहा था, डार्विन या आइंस्टीन, में क्लियर नहीं हूं, कि चौथा विश्व युद्ध स्टोन्स एंड स्टिक्स के साथ होगा। मतलब तीसरा अगर हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो स्टोन स्टिक्स ही बचेंगे, फिर क्या है, मैंने होगा ही नहीं, फिर तो सारी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी अगर हम वर्ल्ड वॉर के चक्कर में पड़े। तो फिर कभी रिक्वेस्ट करता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इसलिए क्लीन क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है कि साफ कपड़े पहनो, इसका मतलब ये है कि नए विचार रखो, अच्छे आइडियाज लो, मानवता के बीच एकता के संबंध कायम करो, शांति और खुशियां लाओ, एंड वॉक अबाउट, और अपने भाइयों के साथ हाथ से हाथ मिला के चलो, सबके साथ, सारे अपनी सारी दुनिया हमारा वो है। देखो हमारी इंडियन फिलोसफी से कितनी मिलती है। हमारी इंडियन फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम, तो वही थे, सारी दुनिया के लोगों के साथ हम हाथ मिला के चलेंगे, सारी दुनिया हमारे भाई है, और उनके साथ हम
मेल जोल से रहना चाहते हैं। इन द शेड, थोड़ी देर के लिए आप आराम से बैठो, कुछ मत करो। अब ये मत सोचना कि कुछ मत करो, हमें जो है ऐसी बात बता रहे हैं, कुछ मत करो। कभी ने खुद क्लियर कर दिया कुछ मत करो, तो ये पॉजिटिव सेंस में लेना है आपको, पॉजिटिव सेंस में लेना है। कुछ मत करो माने कवि ने कहा है कुछ मत करो का मतलब लोग कोई मौत से समझते हैं, लेकिन कवि ने क्लियर किया कि मौत से मेरा कोई मतलब नहीं है। मौत का मतलब तो एंड ऑफ ऑल एक्टिविटीज, लेकिन हम तो कोई नई एक्टिविटी शुरू करने के लिए थोड़ी देर एक्टिविटी को पॉज कर रहे हैं। तो टोटल इनएक्टिविटी से मेरा कोई मतलब नहीं है। लाइफ इज व्हाट शॉर्ट, अरे चलती का नाम गाड़ी, चलाते रहो इसको, जीवन है। इफ यू नॉट सो सिंगल माइंड अबाउट कीपिंग योर लाइफ मूविंग। सारी बात है कि हम इतने मतलबी ना होते, हम इतने स्वार्थी ना होते, केवल अपने जीवन को देख रहे हैं, अपना जीवन चला रहे हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम सब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और इस दुनिया का मतलब इतना नुकसान भी ना होता। तो यूज साइलेंस माय चिल्ड्रन। अगर हम थोड़ी देर के लिए सारे लोग चुप हो जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो ये बाधा बनेगा दुख के मार्ग में और हमें सुख की तरफ पहुंचाएगा। क्योंकि हमने जो है अपने आप को नहीं समझा है और अपने आप को खतरे में डाल दिया है। तो कभी ये कहना चाहता है कि अपने आप को समझो। Once you understand ourselves, we are going to lose everything that's that. Perhaps the earth can teach us. सबसे बड़ी टीचर तो हमारी ये धरती है, ये धरती माता है। एक मौसम ऐसा आता है जब धरती पे सब सूखा हो जाता है, बिल्कुल पतझड़ है, कुछ है, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ सूखे सूखे लगते हैं, लेकिन एक समय बाद आपने देखा फिर हरा भरापन अपने आप ही आ जाता है। तो उसी तरह से हम लोग भी थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाए तो अपने आप ही कुदरत की देन होती है, हम सब लोग फिर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को समझने के बाद अब आप 12 तक गिनती कीजिए, थोड़ी देर के लिए शांत बैठो, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और आनंद लो इस क्षण का। दैट्स ऑल, इट्स गुड। अब देखिए ये जो पोम हमने पढ़ाई है, एक मिनट, इस पोम में क्या क्या चीजें हैं। एक होता है एसोनेंस, एसोनेंस है। एसोनेंस का मतलब होता है ओ या ई साउंड जो वावल की होती है दो शब्दों के बीच में आना, इसको बोलते हैं एसोनेंस। अगर किसी शब्द के बीच में ओ या ई साउंड रिपीट होती है तो उसको एसोनेंस कहा जाता है। एक इसमें डिवाइस प्रूव हुई है, देखो वो है एनाफोर। ये एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा अगर रिपीटिशन होता है, लेट्स साउंड जो होती है इसका रिपीटिशन हो रहा है 2 बार, तो ये क्या है? एनाफोरा कहा जाएगा। ये है जैसे लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 2 बार लेट्स का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे एनाफोरा है। तो आप इसको समझेंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज आप इतना समझ लीजिए, and if you have any doubt you can come out with your queries in comment box, and if you like this you subscribe the channel to my channel, and that would be a great treat for me. Okay.